the biotechnology and this application. It is having two parts, part A and part B. Part A consists of your principles and processes of biotechnology, genetic engineering and recombinant DNA technology. But before going into biotechnology and recombinant DNA technology, we must have a thorough idea of what actually DNA is. DNA टा कौन आमर ता ऊपर आमर पूरा थरो आइडिया रहबा दरकार काहे कारण आमे डील करछे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. When we are dealing with recombinant DNA technology, we are actually carrying out the modification of DNA. आमे डीएनए रो मैनिपुलेशन करछे, आमे डीएनए को चेंज करछे. सो आमे जेबे पर्यंत डीएनए रो स्ट्रक्चर टा भलो भाबरे जानि ना हूँ आमको बायोटेक्नोलॉजी किंबा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बुझेबा पई बहुत असुविधा होबो. So I'll just go into a brief of DNA and RNA and then I'll be going into what biotechnology is. So as we all know that DNA is double stranded, it is helically coiled and it is our genetic material. We are what we are because of DNA. Each and everything within us is basically, it is because of our genetic material, that is the DNA. It consists of your two strands and each of the strand is made up of your nucleotides or they are made up of your polymer. So DNA is polymer of your nucleotides. It is a chain of nucleotide. Each strand of DNA is made up of your nucleotide. Each nucleotide in DNA is connected with each other with the help of a phosphodiester bond. The yellow color over here represents the phosphodiester bond. What are the nucleotides? Basically, we are having 4 types of nucleotide, but the basic feature of your nucleotide is that it contains a phosphate group, a sugar group and a nitrogenous base. The nucleotide differ based on what nitrogenous base they are having, and depending on it there are 4 types of your nitrogenous base: your adenine, thymine, guanine and cytosine. So we call like while sequencing we actually call our bases as A, T, G, C based on the bases which are present. So the backbone of our DNA is made up of your phosphodiester bond, which is represented by yellow, and each of the strand of this is one strand and this is one strand, and both these strands are communicated with each other with the help of your base pairing, and this base pairing is highly specific. We call it as a complementary base pairing. How is it specific? It is specific because always thymine will base pair with your adenine by your double bond, double hydrogen bond, and guanine will base pair with your cytosine with your triple hydrogen bond. So 3 bonds are there. ता माने कौन आमर जो बेस पेयरिंग जो होची आमर दीटा जो स्ट्रैंड अच्छी, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री. डीएनए रो दीटा जाक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री आउ तांको भितरे स्पेसिफिक बेस पेयरिंग द्वारा दीटा जाक स्ट्रैंड आमर जोड़ा हेची. सो गोटे स्ट्रैंड रो जो बेस अच्छी सपोज टी अच्छी, टी सदा बेले ता अपोजिट स्ट्रैंड रो ए बेस सहित ही जोड़ी हम, आउ का सहित भी से जी कि सी सहित से केबे भी जोड़ी है पारिबो नाही. आमर थंब रूल ऑफ डीएनए इज दैट ऑलवेज थायमिन विल बेस पेयर विथ adenine and your guanine will base pair with your cytosine. So this is what a DNA structure looks like, and the backbone is made up of your phosphodiester bond. Now we will be coming to your RNA. Basically RNA is single stranded and RNA is synthesized from your DNA template. आमर जो दीटा जो डीएनए स्ट्रैंड अच्छी आमर ए दीटा डीएनए स्ट्रैंड भितर गोटे डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट एक्ट करे जहाँ उपरे कि आमे आरएनए टा को सिंथेसाइज करू. तो आमे आरएनए टा डीएनए रु पाई थाओ बाय द प्रोसेस ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन. The bases that we had in DNA, we had 4 bases in DNA. We are also having 4 bases in your RNA, but over here there is a single base pair chains, that is cytosine is there, guanine is there, adenine is there, but instead of thymine
we are having uracil in RNA. So how is this, a bit into how is this RNA synthesis from your DNA. The two strands of our DNA that we are having, we call one strand as sense strand and the other strand as antisense strand. At the same time, one strand is also known as a template strand and the other strand is known as a coding strand. So it is always the template strand. Why it is known as a template strand? Because it forms a template for your synthesis of RNA. So it is this template strand that will be producing a complementary mRNA. It is forming a template for producing complementary mRNA. So if we see the sequence of your template strand and your mRNA, this is a template strand, this is mRNA. So if you see, they are exactly complementary to each other, except for the fact that if this would have been a DNA, we would have been having thymine instead of uracil, because adenine will always base pair with thymine. ता माने कौन, जदि एटा DNA हेई थांता तो आमर एडेनाइन अच्छी, एडेनाइन सहित सदा बेले थाइमिन ही बेस पेयर करबो, बट जेहेतु एटा गोटे mRNA ए जेते बेले अच्छी ता कॉम्प्लीमेंटरी बेसटा इज uracil. And if we see this mRNA is exactly similar, or the sequence of mRNA is exactly similar to your coding strand, except for the fact that wherever your thymine is there, we are having uracil. Okay, so it is exactly, let us read this sequence. We are having TAGCGCAT. What we are having for RNA, in case of this thymine, we are having uracil, U, A is same, G is same, C is same, G is again same, C, A again in place of thymine, we are having uracil. So it is, the sequence is similar to the coding strand, except for the fact that the thymine is replaced by your uracil. So this is your formation of formation of your RNA from your DNA, and the process is your transcription. Now after formation of your RNA, the RNA provides the code for synthesis of protein. Protein is nothing but it is polymer of your amino acid. Amino acid are held together in protein with the help of your peptide bond. So after having this brief introduction about DNA, RNA and protein, now we will venture into what exactly biotechnology is. Biotechnology is coming from your two words, bio from biology and technology, which means tool. Okay, so when we are using biological organisms, to produce certain tools or techniques for the betterment of human being, we will be calling it as biotechnology. आमे बायोटेक्नोलॉजी रे आमे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म गुड़ा को आमे यूज करूचे, आउ से ऑर्गेनिज्म गुड़ा को यूज करिकी तांको डीएनए को मैनिपुलेट करिकी आमे किछि प्रोडक्ट बाहर करछे. प्रोडक्ट गुड़ा को काहे की बाहर करछे, प्रोडक्ट गुड़ा को आमे जेबे भी किछि बायोटेक्नोलॉजी रो एक्सपेरिमेंट करू, आमे एई माइंडसेट रे करू जे जहाँ भी आमे आउटपुट पाइबू सेटा ह्यूमन रेस रो भलो पाई सेटा आमे करि थाउ. With this note, if I have to define biotechnology, biotechnology is a industrial application of biochemistry, microbiology, chemical engineering, genetic engineering in order to make the best use of the capabilities of your microorganism, culture tissue, cell, etc. for the benefit of mankind. आमर गुड़ाए डेफिनेशंस अच्छी बायोटेक्नोलॉजी रे, एंड दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन. तो ए डेफिनेशन रे इट हैज फर्स्ट गिवन दैट इट इज इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन. ओके, इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन, ये इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन कहीं कहला कारण आमर एंड थॉट प्रोसेस इज आमे जो भी प्रोडक्ट बाहर करछु आउट ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट हैज टू रीच द मैनकाइंड. सो सेथिपाई कंसिडरिंग अ पॉपुलेशन आमको लार्ज स्केल रे आमको से प्रोडक्ट गुड़ाक दरकार, सेथिपाई से लिखिछि इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग. मुझे खाली अल्प किछिटा साइंस रो स्ट्रीम गुड़ाक ये मेंशन करछि, बट
your biotechnology or your recombinant biology is basically an amalgamation of your huge amount of your scientific discipline. गुड़ाए साइंटिफिक डिसिप्लिन मिसिकी आमर बायोटेक्नोलॉजीटा तैयारी हेची इनपुट सबू डिसिप्लिन रु आसुची ए सबुतक डिसिप्लिन मिसिकी दे आर वर्किंग ऑन लाइव ऑर्गेनिज्म उपरे काम कला परे वी आर गेटिंग अ एंड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज दैट प्रोडक्ट इज समथिंग व्हिच विल बी यूजफुल फॉर द मैनकाइंड. Okay, so the term biotechnology was coined by Carl Erke in 1919. So it is this figure shows that it is an amalgamation of many disciplines. All these disciplines they contribute for your molecular biotechnology. What is the end product? The end product is we generate a wide range of your commercial product. What are those commercial products? It might be crop. आम पाखे बीटी क्रॉप अच्छी ट्रांसजेनिक क्रॉप अच्छी जो माने कि ड्राउट रेजिस्टेंस जो माने कि पेस्ट रेजिस्टेंट हाई यील्डिंग वेराइटी आम पाखे ट्रांसजेनिक क्रॉप अच्छी. Then drugs, we are getting new drugs out of this molecular biotechnology processes. We are getting vaccines, we are getting recombinant vaccines now like your vaccine used for your HPV associated cervical cancer or your vaccine we are using for your hepatitis. Then it is also we are getting new diagnostic tools. What is diagnostic? These are basically testing tools which are present. One of the live burning example of your testing tool now is your RT-PCR kit and your antigen testing kit which we are using for detection of your coronavirus. Then apart from that it also helps in the improvement of livestock. आमे माने कैटल फार्मिंग करूचे पोल्ट्री फार्मिंग करूचे फिश फार्मिंग करूचे एपिकल्चर वी गो ऑन विथ मेनी टाइप ऑफ फार्मिंग एसोसिएटेड विथ एनिमल्स. सो से आमको सपोज इफ वी आर डूइंग कैटल फार्मिंग आम कैटल फार्मिंग पाए आम पाखे ट्रांसजेनिक काउ अच्छी जी कि हाई यील्डिंग वेराइटी इट इज़ अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ आमको बहुत अधिका मिल्क दे था और क्वालिटी ऑफ मिल्क हैज़ ऑल्सो बीन चेंज. इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क विच द काउ इज़ प्रोड्यूसिंग. So in same way animals are modified in one or other way for the betterment of humankind. Now we will be coming to your principles of biotechnology. What is the basic principle of biotechnology? This entire world of biotechnology is basically standing on two pillars, two core technique. It is standing on two core technique and it is your first is your genetic engineering or recombinant DNA technology and second is your maintenance of an sterile ambience or a sterile atmosphere. So what is your genetic engineering? Manipulation of your DNA, manipulation of your DNA or changes in the chemical structure of the DNA is known as genetic engineering. Okay, Tanaru genetic engineering. Genetic means we are dealing with our genetic material which is our DNA. आमे जेते बेले DNA रे आमे चेंजेस करू आमे DNA को काटी थाओ किंबा जोड़ी थाओ ए चेंजेस उडा को जेते बेले करू आमे सेटा को जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग टा काहे कि लखा हला हमर जहा भी इंजीनियरिंग आमे करूछु इट हैज टू बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड. Okay, that's why this is known as genetic engineering. Now what is your recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology basically it involves combination of your DNA, combination of your DNA from two different sources. ता माने कौन ता माने मु गोटे मोर सपोज डिजायर्ड DNA मु जोटा चाहूची आउ जार कि प्रोटीन प्रोडक्टा मत ह्यूज अमाउंट रो दरकार मु गोटे सोर्स रु आनिली बा गोटे ऑर्गेनिज्म रु आनिली आउ ए डीएनए टा को नै कि मु जेते बेला आउ गोटे ऑर्गेनिज्म रो डीएनए भितरे सेटा को इंसर्ट करूची किंबा जॉइन करूची देन आई एम क्रिएटिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. काहे कि रिकॉम्बिनेंट ना दियाला दीटा अलग अलग सोर्स रु डीएनए निया है कि सेठी कंबाइन करा हेची सेथि पे ता ना दिया हला रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द टेक्नोलॉजी इज नोन एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. So it was Stanley Cohen and your Herbert Boyer who first produced a recombinant DNA in 1972. So what did they do basically?
this is your bacteria which is your Salmonella typhimurium, and this bacteria is having a gene which is your tetracycline resistant gene. Okay, so मो भितर जदि ए साल्मोनेला टाइफिमुरियम अच्छी आ मो टेट्रासाइक्लिन खाइबी ए बैक्टीरियाटा केबे भी मरिबो नाही काहे ना ता पाखरे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अच्छी. इट विल बी प्रोड्यूसिंग योर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन who is providing providing your environment in which the bacteria will not be dying in the presence of your antibiotic tetracycline. So what they did is they took out this tetracycline resistant gene from your salmonella, and they took out plasmid from your bacteria. What another bacteria, it is not from salmonella, it is from another bacteria. Then what is this plasmid? Plasmid are round circular DNA. They are double stranded round circular DNA, and they are not part of the bacterial chromosome. Bacteria ro chromosome alaga thai aur plasmid alaga thai, but both of them are there inside the bacteria. So they isolated this plasmid from another bacteria. They cut open the bacteria. एमाने एठी जो tetracycline gene जो बाहर करछेंती, they have cut the tetracycline gene from this genome of your Salmonella typhimurium. They are molecular seizures. आमे restriction endonuclease कहूचे जे कि आम DNA टाको कट करी पारे. So जो restriction endonuclease रे tetracycline gene टाको कट करा हिथिला, सेई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे प्लाज्मिड टाको भी कट करा है कि प्लाज्मिड को ओपन करा हला. ओके, बिकॉज इट इज अ क्लोज सर्कुलर डीएनए सेटा को जेबे पर्यंत मु कट करिनी मु टेट्रासाइक्लिन जीन टाको इंसर्ट करी पारिबी नाही. So after cutting open this plasmid, this tetracycline gene was inserted into the plasmid. Okay, and it was inserted and joined into the plasmid with the help of your DNA ligase. Okay, this ligase helps in the formation of your phosphodiester bond. मु जेते बेले कट कली मु कोन कट करथिली, मु बेसिकली डीएनए रो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टाको मु हाइड्रोलाइज करथिली किंबा कट करथिली with the help of enzyme. Okay, after that now I am going on with a combination process. किए जॉइन करछि दीटा पीस ऑफ डीएनए जोटा कि अलग अलग सोर्स रु आसी किए जॉइन करछि, इट इज योर एंजाइम डीएनए लाइगेस. Okay, so now we got a recombinant DNA molecule. काहे कि recombinant कारण एटा गोटे सोर्स रु आछि tetracycline resistant gene and plasmid टा आ गोटे सोर्स रु आछि. After getting this tetracycline resistant plasmid, this plasmid was inserted into your another bacteria which is your Escherichia coli or also known as your E. coli. So when this plasmid was inserted into your E. coli, the tetracycline gene was transcribed into mRNA, and mRNA protein was produced from your mRNA. The protein is known as your tetracycline resistant protein. Initially E. coli was not tetracycline resistant. माने मो भितर जदि E. coli था मो tetracycline antibiotic खाई थांती तो E. coli टा मरी सारंताड़ी. बट एबे जेते बेले आमे गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा इंसर्ट करछे दाहा भितर कि tetracycline resistant gene अछि. Now that gene is conferring this E. coli tetracycline resistant. एबे E. coli टा tetracycline resistant हेई गला. So this is how the first recombinant DNA was developed by Cohen and Boyle. Now the second one is maintenance of your sterile environment. Sterile अलगा, cleanliness अलगा. आमे जहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट आमे जहाँ भी किछि करूछु आमर environment टा sterile हेथिबा दरकार. It should be microbial free. Why? Because we are using your live organism. ए लाइव ऑर्गेनिज्म गुड़ा को नहीं कि आमे जो प्रोडक्ट पाउचु, वी गेट प्रोडक्ट्स लाइक योर एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम्स एसेट्रा. So these things will be going into human being.
सेटा ह्यूमन बीइंग भितर को जीव आउ सेथिरे जदि किछि भी कंटामिनेशन हे गला it will be affecting that human into which it has been administered. So the first rule of your biotechnology is that wherever the experiments have been conducted, it should be sterile. आमे जेते बेले गोटे एक्सपेरिमेंट करू आमको क्लोनिंग सिखा जाए नहीं, आमको प्लाज्मिड आइसोलेशन सिखा जाए नहीं, आमको डीएनए आइसोलेशन सिखा जाए न थाए, आमको फर्स्ट कौन सिखा जाए थाए आमे से एनवायरनमेंट को केमिति स्टेराइल करिबु, केमिति माइक्रोबायल फ्री करिबु, आमको सेटा सिखा होई थाए. Okay, so these are the two principles on which the entire field of biotechnology rests. So this is your gist of your recombinant DNA technology. Entire recombinant DNA technology ta केमिति होउची एटा तार gist. Then we will be going in detail about your recombinant DNA technology. So first is generation of your DNA fragment and selection of the desired piece of DNA. So generation of your DNA fragment and desired piece of DNA माने कौन? First मु चिन्हिबा दरकार मते को मोर प्रोडक्ट टा कौन, मते को जीन टा दरकार. फर्स्ट मते सेटा मु फर्स्ट सिलेक्ट करबा दरकार. मु एठी एग्जांपल नेची ह्यूमन इंसुलिन जीन. व्हाई ह्यूमन इंसुलिन जीन? बिकॉज नाउअडेज वी आर सफरिंग फ्रॉम योर डायबिटीज. डायबिटीज माने कौन? डायबिटीज माने आम बॉडी भितर आइदर कम अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस होची नले इंसुलिन किछि भी प्रोड्यूस होनी. तो आमको बाहर इंसुलिन दरकार, आम ग्लूकोज लेवल टाको मेंटेन करबा पे आमको बाहर इंसुलिन दरकार. इन ओल्डर डेज पुराणा काल रे आमे ए इंसुलिन उडाक एनिमल सोर्स रु पाउथुलु, यूजुअली फ्रॉम बोवाइन और योर पिग. एमानक इंसुलिन आइसोलेट करिकी प्यूरिफाई कराई कि ह्यूमन बीइंग मानकु दिया होतला. बट it was associated with side effect like your allergies, because of which this recombinant DNA technology came into picture and your recombinant insulin was created, which is known as Humulin. So first I must select what is the product that I need and what is the gene that I need, or what is the insert or the gene that I need to create that product. So 80 this is the eukaryotic chromosome. ए eukaryotic chromosome भितरु मोर स्पेसिफिक जीन टाको मु कट करनेली. दिस रेड वन रिप्रेजेंट्स insulin gene. For example, मु जेतेबेले क्रोमोसोम टाको कट करूची, I am cutting it with the help of restriction endonuclease. So when I am cutting this chromosome with a restriction endonuclease, I am getting huge array of fragments. मते खाली इंसुलिन जीन रो फ्रैगमेंट मिलुची ताहा नुहे, मते आउरी भी गुड़ाए फ्रैगमेंट्स गुड़ाक क्रोमोसोम रु मिलुची. So there is a selection process by which I can screen out my gene of interest, which is the insulin gene. Okay, the second one is insertion of the selected DNA into cloning vector to create a recombinant DNA, a chimeric DNA or your heterologous DNA. तापरे मते गोटे vector दरकार. What is a vector? A vector is a piece of DNA that will help this foreign gene to be introduced into a new host. गोटे नुआ होस्ट भितर को जीवापे ए वेक्टरटा आमको हेल्प करुची. किए जीवापे? फॉरेन जीन टा जीवापे ए नुआ वेक्टर आमको हेल्प करुची. सो मु जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे मो जीन टा को काटिची बा क्रोमोसोम टा को काटिची, से सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे मु प्लाज्मिड टा को भी काटुची. सो दीटा जाको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे काटी सारिकी देन मु लाइगेशन प्रोसेस टा को मु स्टार्ट करची. लाइगेशन माने कौन? मु ए जो मोर जीन ऑफ इंटरेस्ट आई एम जॉइनिंग इट विथ अ प्लाज्मिड. हु डज दैट? डीएनए लाइगेज इज डूइंग दैट. सो नाउ आई गॉट माय recombinant DNA. After this, third is introduction of recombinant vector into your host cell. Example, your bacterial cell. Then there are processes by which I can introduce my recombinant DNA carrying my gene of interest into your host cell. Over here it is a bacterial cell. So after introduction, then selection and multiplication of clone containing the recombinant molecules are carried out. मु जेतेबेले इंट्रोड्यूस करूची मु गोटे बैक्टीरिया नौनी कि गोटे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नौनी. आई एम टेकिंग मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड थ्राइस द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए.
एते अमाउंट रे मु जेते बेले बैक्टीरिया नहीं कि गोटे एनवायरनमेंट सेट करची से एनवायरनमेंट भितरे जेते बेले बैक्टीरिया ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए उड़ा को तांको भितर को नौचंती सबु बैक्टीरिया नहीं पारंती नाही सबु बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तांको भितर को नहीं न थांती मते से भितर सिलेक्ट करबा को पड़िबो को बैक्टीरिया भितरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा अछि सो दे आर प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्शन जो जहाँ द्वारा कि मु इजीली जानी दे पारिबी को बैक्टीरिया भितरे मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टा अछि सो आफ्टर सिलेक्टिंग देन आई अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो इन मास स्केल सेटा ग्रो करबा माने कौन हम जेमिति बैक्टीरिया डिवाइड करछि सेमिति मोर प्लाज्मिडटा भी डिवाइड मो प्लाज्मिडटा भी रेप्लिकेट होउछि आ तार भी नंबरटा इंक्रीज होउछि सो एटा कौन आमे कहूचे ए प्रोसेसटा को आमे कहूचे क्लोनिंग यार ना क्लोनिंग कहीं केला कारण एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस ऑफ डीएनए मते मिलिबो ए जो प्लाज्मिड जो विथ माय इंटरेस्ट प्रति बैक्टीरिया ए गोटे जो बैक्टीरियल सेल भितर जेते बैक्टीरियल सेल एबे ग्रो करूछंती तांको भितरे मोर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अछि इट इज द एग्जैक्ट कॉपी इट इज द जेरॉक्स दैट व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ क्लोनिंग प्रोसेस ए क्लोनिंग प्रोसेस द्वारा आमे एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए पाऊ आ बहुत अधिका अमाउंट रे आमे पाऊ आ क्लोनिंग हे साला परे तापरे मोर जीन ऑफ इंटरेस्ट रो एक्सप्रेशन हुए माने कौन से जीन ऑफ इंटरेस्ट से डीएनए रु मोर एमआरएनए तैयारी हला एंड एमआरएनए पर प्रोटीन भी सिंथेसाइज हला सो आई एम गेटिंग माय डिजायर्ड प्रोडक्ट सो दिस इज इन जस्ट योर एंटायर रिकॉम्बिनेंट डीएनए so DNA is polymer of your nucleotide. So now we will be dealing with your tools of recombinant DNA technology. For carrying out this recombinant DNA technology, we are having different type of tools. So the tools that I have mentioned over here, it is just part of the array of tools that we are having for your recombinant DNA technology process. आमर गुड़ाए टूल्स अच्छा किंतु तुम मानक बेसिक एवं जो जो टूल्स गुड़ाक दरकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से गुड़ाक ये मेंशन होती व्हाट आर दे योर एंजाइम्स वी रिक्वायर एंजाइम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉम्पिटेंट होस्ट PCR is a polymerase chain reaction, then DNA probe and your gene therapy. So we will be going one by one into the tools. First is your enzyme. So there are different type of your enzyme, your lysing enzyme, cleaving enzyme, synthesizing enzyme, DNA ligase and your alkaline phosphatase. So first we will be going into your lysing enzyme. आमे जेते बेले आमर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टा बेस होची डीएनए ऊपर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए टा कोठी अछि डीएनए टा न्यूक्लियस भीतर अछि एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Where is this nucleus? This nucleus is in cytoplasm and the boundary of your cytoplasm is plasma membrane. So मते DNA भितर को जदि मु DNA पाखु को जीवा को हेले first I have to open the cell. I have to break down the plasma membrane first or your cell wall and plasma membrane in case of your plant cell. So for that we are having different type of your lysing enzyme. Lysing enzyme कौन जो enzymes सेल गुड़ा को ओपन कर दिए ताकि आमे डीएनए टा इजीली पाइबू से एंजाइम गुड़ा को आमे लाइसिंग एंजाइम कहबा. आई हैव टेकन हियर लाइसोजाइम एज एन एग्जांपल. दिस लाइसोजाइम आर यूज्ड टू डिसॉल्व योर बैक्टीरियल सेल वॉल. दिस इज अ कैरिकेचर. योर लाइसोजाइम इट इज ब्रेकिंग ओपन द बैक्टीरियल सेल वॉल. In case of your eukaryotic cell, we can easily disrupt the eukaryotic cell with the help of your cell membrane, with the help of your mild detergent like your sodium dodecyl sulfate. Now after lysing, then we will be dealing with your cleaving enzyme. What are this cleaving enzyme? This cleaving enzyme will be cutting or splitting the DNA at specific sequences or at specific sites. से माने एणु तेणु को भी जगार डीएनए टा को काटिबे नाही. से माने जेतेबेले डीएनए टा को काटिबे गोटे स्पेसिफिक सीक्वेंस टा को रिकॉग्नाइज करके सेही जगार ही से माने डीएनए काटिबे. दिस एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज योर न्यूक्लियसेस. काहे कि से माने डीएनए को किबा आरएनए को काटुचंती दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज योर
we are having three type of your nucleases: your exonucleases, your endonucleases, and your restriction endonucleases. So first we will be dealing with your exonucleases. Exo माने कौन? बाहर. Okay. So जो एंजाइम गुड़ा को बाहर डीएनए टा को काटुची से गुड़ा को आमे कहबा exonuclease. The enzyme that cuts the nucleotide one by one from 5' or 3' end of the DNA molecule. 80 dekha, 8 if this is a DNA molecule, 2 strands of your DNA molecule, from we say exo as this reason. 8 outside of your DNA. So jete bele ei reason ru gote kariki कटा होउची आमर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टाकू आमे सेटा कहबा एक्सो से एंजाइम टाकू कहबा एक्सोन्यूक्लियस. So over here we can see that exonuclease has cut a piece of your DNA containing few base pair from your 5'. Okay. Now your endonucleases. Endo means from within. The enzyme which is cleaving or cutting the DNA from inside is known as your endonuclease. एंडोटा डीएनए को भितरु काटे बाहर काटे डीएनए रो भीतर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टाको से काटुची. सो एंडोन्यूक्लियस ऑल एंडोन्यूक्लियस दे कट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. एंडोन्यूक्लियस सदा बेले गोटे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को काटे. सो आमे एठी देखि परिबा दिस इज एन इंटैक्ट स्ट्रैंड ऑफ योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. व्हेन एंडोन्यूक्लियस कम्स it is cutting the DNA from within. भितरु से किछिटा base pair of DNA सहित गोटे chunk of DNA से काटी निउची. And final is your restriction endonuclease. And this restriction endonuclease is highly important for our recombinant DNA technology. Okay. So what are these restriction endonuclease? These are also known as your molecular scissors or molecular scalpel. They are your bacterial enzymes that can cut or split the DNA from any source at specific sequences or at specific site. Emanako cutting is highly specific and they will cut the DNA at that particular sequence of specific site only, which is known as the restriction site. So Swiss microbiologists Werner Arber and your Stuart Lane discovered restriction endonuclease. The first restriction endonuclease that was discovered and isolated was HIN3 and it was discovered by Hamilton Smith in 1970. After this discovery of your first restriction endonuclease, which is your HIN3, about 4,000 restriction endonucleases have been isolated and discovered. Most of the restriction sites usually have 4 to 6 base pair. They are 4 to 6 base pairs long. ता माने कौन? आमे एठी गोटे एग्जांपल निया एची HIN3 रो restriction site. Okay. HIN3 restriction enzyme कौन करिबो? DNA को जेते बेले काटिबो से फर्स्ट ए सीक्वेंस ता को चिनिबो DNA पे. What is the sequence? AAGCT2. This is the restriction site of HIN3. Okay, it will first recognize this sequence and then cut the DNA. ये जो sequence टा HIN3 रो restriction site रहला यार केते base pairs हमें अबे गणी नेबा 1 2 3 4 5 6. It is having your 6 base pairs. That is restriction site रे हमर either 4टा base pair रो sequence थिबा नले 6टा base pair रो हमर sequence थाई पारे. Now what an important thing in case of your restriction site is your restriction site are palindromic. What do I mean by palindromic? Meaning that the sequence read the same in both the complementary strand of DNA when we are reading from opposite side. तामाने एठी गोटे मु example नेइची मैडम रो. एबे हमें मैडम को राइट लेफ्ट टू राइट हमें पढ़िया पे चेष्टा करिवा. What do I read? MADAM. एबे मु से सेम वर्ड टाकू लेफ्ट टू राइट मु पढ़िवा आरंभ करिवि. मु कोन पढ़छि? सॉरी, राइट टू लेफ्ट को मु पढ़िवा आरंभ करिवि. मु कोन पढ़िबि? MADAM. So it doesn't matter whether I am reading it from left to right or from right to left. I read the same. सेमिति DNA रो जो restriction site अछि मु जदी लेफ्ट टू राइट पढुची गोटिए स्ट्रैंड
मु जदि से रेस्ट्रिक्शन साइट टाको लेफ्ट टू राइट करछि गोटे स्ट्रैंड रे मु सेही सीक्वेंस टाको पढ़िबी जेतेबेले मु राइट टू लेफ्ट पढ़ुछि आउ गोटे स्ट्रैंड आमे देखि नेबा एटा रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ हिंट 3 सो फर्स्ट स्ट्रैंड रे आई एम रीडिंग फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट A, A, G, C, T. ओके नाउ द कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड तल स्ट्रैंड जो रहा से मु राइट रू लेफ्ट पढ़ी मु कौन पढ़ी A, A, G, C, T, T. I am reading the same. So this is known as your palindromic sequence and it is very much important when we are dealing with your restriction endonuclease. एटी पिंक कलर रे जो डिपिक्ट कराई छि दिस पिंक कलर इज योर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आउ एटा हला रेस्ट्रिक्शन साइट आउ ए जो एरो जो इंडिकेट कराई छि दिस एरो इंडिकेट कोठी गोटे हिंट 3 को जागा रे डीएनए को कट करू छि after having this introduction now we will be going into the nomenclature of your restriction endonuclease a restriction endonuclease ro ना हमें किमिति हिंट 3 इको R1 PST1 ये सब हमको बहुत अबाया लगे but all this name they are coming from the organism from which it has been discovered. We will be taking the example of your hint 3. Hint 3 टा में को टू आइसोलेट hint 3 टा हमरा को टू आइसोलेट कराइतला hint 3 टा हमरा आइसोलेट कराइतला from your Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae ru isolate कराइतला Haemophilus is a genus name and influenzae is your species name. So genus name ro first letter H amara hint 3 ro first letter rahila genus ro first letter जोटा hint 3 रो भी first letter amara rahila which is your capital H. Why it is your capital H? Because it represents the genus. And the next two letter in our restriction endonuclease that is IN. Where I am getting it from? I am getting it from the specific name. Okay, the specific name in the specific name the first two letter is IN. So my second and third letter of my restriction enzyme is IN. आमे genus रू आमे first letter टा नोचे generic name रू आमे first letter नोचे specific name रू दीटा letter नोचे तो हमारा first letter represents your genus name second two letter और second and the third letter in case of your restriction endonuclease it represents your specific name then the strain from which was isolated was RD so third letter ta represents the strain which is your D and this Roman numeral it is represent the order in which it was discovered first order रे discover इतला second order रे discover इतला third order रे discover इतला को order रे सेटा discover इतला so सेटा represent करछि ए जो Roman numeral था this hint 3 was discovered in the third order in the same way we are taking another example of your eco R1 was discovered from your Escherichia coli. This Escherichia coli, the genus name starts with your capital E. So E, species name is coli. First two letter of species name is CO. So we are writing CO. Then strain name is RY13. So the strain is R and the order it was identified was first order. So we are writing eco R1. And we should keep another thing in mind that the eco or the hit that is the genus and the species name the letters that we are deriving from your genus and the species name it is always written in italics so this is about how your this restriction enzyme are named now we will be going into your types of restriction enzyme what are the type of restriction enzyme आमे जदि अलग अलग बही को जिबा आमे को बही रे तीनटा टाइप पाइबा आउ को बही रे चारटा टाइप पाइबा up to 6 types we are having it in our books but for our knowledge we will be dealing with only 3 types of your restriction enzyme which are very much important what are they type 1 type 2 and type 3 among these the type 2 restriction endonuclease is most commonly used for your recombinant DNA technology process now let us have a look at what are this type of restriction endonuclease So type 1 restriction endonuclease, this is one example.
टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे एंजाइम टा कौन करिवो आगो रेस्ट्रिक्शन साइट टा को चिन्ही की रिकॉग्नाइज करी की रेस्ट्रिक्शन साइट रे बाइंड कला but where does it cut the DNA? It cuts the DNA about 1000 base pair away from the restriction site. माने restriction site भितरे से कट करिवो नहीं के बेबी से around हजार माने खाली मु गणी जाई के हजार रे ही कट करूनी से around 1000 base pair away it will be cutting the DNA. So this type of cleavage is non specific. एटा आमे केबे भी हमरो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी रे आमे यूज करू ना हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे आमे यूज करू ना व्हाट अबाउट दिस टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिस टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट रिकॉग्नाइजेस द रेस्ट्रिक्शन साइट it recognizes the specific restriction site and it cuts the DNA within that restriction site so this type of cutting is highly specific एटी आमे जिमिति देखिबा एटा हिंट 3 रो एग्जांपल नि आइची एटा होची ग्रीन रे रिप्रेजेंट करा आइची हिंट 3 एंजाइम एंड दिस हिंट 3 विल बी कमिंग एंड बाइंडिंग टू द रेस्ट्रिक्शन साइट एंड आफ्टर बाइंडिंग इट विल बी कटिंग द डीएनए विदिन द रेस्ट्रिक्शन साइट से ए रेस्ट्रिक्शन साइट हमर एटा जो फर्स्ट दीटा ए मजिरो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टाको से कट करबो आउ गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जो बाइंड करथिबो से भी तार फर्स्ट दीटा ए एडेनिन भीतर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टाको से लीव करूची सो दिस इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट इज रैम्पेंटली यूज्ड फॉर योर this recombinant DNA processes. The third type of restriction enzyme it is recognizing the restriction site but it is cutting the DNA around 20 to 25 base pair away. So एटा भी एते specific so ए तीनटा जक भितरु आमे टाइप 2 restriction enzyme टाको आमे recombinant DNA पाई आमे यूज करी now coming to the cleavage pattern of your restriction enzyme ए restriction enzyme गुडा को DNA टाको को भाबरे काटी थांती तांको पैटर्न ता केमिति usually these are cutting the DNA into pattern your cohesive or sticky end also we call out the floss end and your blunt end floss end blunt end माने कोन एठी देखो एठी गोटे restriction site अछि GAATTC जते बेले restriction enzyme आसी की काटुची restriction enzyme टा GA भीतर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टाको काटिला गोटे स्ट्रैंड रो रिवर्स स्ट्रैंड रे भी ए जो जीए भीतर से रेस्ट्रिक्शन साइट टाको काटिला सो एटा जो से काटिला ए काटिबा द्वारा हमको कोन मिला दीटा जाको डीएनए सेपरेट हे गला किमिति सेपरेट हे चंदी सेमानकर गोटे स्ट्रैंड रे ओवरहैंगिंग पोर्शन अछि ओवरहैंगिंग पोर्शन माने कोन किछिटा बेस अछंती जो मानक पाखरे की कॉम्प्लीमेंटरी ताकर बेस पेयरिंग नाही so we call this overhanging as your sticky overhang or your floss DNA किबा ए वे रे जो काटिला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ता आमे ताको कहबा sticky ओके सपोज गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ठीक मझिरु दीटा जाको स्ट्रैंड रे ठीक मझिरो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ताको काटिला दैट इज रेस्ट्रिक्शन साइट रो दीटा जाको फॉस्फोड ऑपोजिट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ताको काटिला दीटा जाको स्ट्रैंड so what we will get a blunt end एठी हमरो किछि भी overhang गुडा को ना so usually this sticky end is used for your cloning processes काहे कि बहुत सुविधा हे जाय complementary जेते बेले थाए sites we will be dealing with how it is useful जेते बेले complementary site थाए हमरो base pairing और ligation रे बहुत easy हे जाय ता माने नाही जे we don't use this blunt end restriction enzyme for your cloning we are using it but it is a bit difficult as compared to your cloning with the help of your this restriction enzyme which are generating your sticky ends now this is just a chart showing if we are digesting with your hint 3 restriction enzyme we are getting your 5 prime protruding end माने आमे जो sticky end पाउचे 5 prime end रे sticky end उडा को पाउचे आमे जदि PST1 रे डाइजेस्ट करछे एटा PST1 रे रेस्ट्रिक्शन साइट आमे जतो PST1 रे डाइजेस्ट करछे आमे
3 प्राइम रे आमर प्रोट्रूडिंग एंड गुड़ाक आम पाचे स्टिकी एंड ओवरहैंगिंग एंड गुड़ाक आम पाचे आम जदि इको आरबी सहित डाइजेस्ट करोचे वी आर गेटिंग अ ब्लंट एंड नाउ कमिंग टू योर डाइजेशन अगेन एटा इको आर1 रो एटा गोटे आउरी भी माने भलो पिक्चर दोचे हाउ एक्जेक्टली कटिंग प्रोसेस टा होचे एटा इको आर1 रो रेस्ट्रिक्शन साइट दीटा इको आर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आसिकी ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बा कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रे बाइंड कले एंड दे विल बी क्लीविंग द जीए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन ईच ऑफ दिस स्ट्रैंड तो जीए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टा जदि कट करा हे गला हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग गुड़ाक एते स्ट्रांग न थाए से माने आपे आपे ब्रेक हो जाती एंड वी आर गेटिंग योर स्टिकी एंड ऑफ योर डीएनए ए स्टिकी एंड सपोज आमे को भी डीएनए हो आमे डीएनए को भी सोर्स रो आसी थाउ आमे जदि इको आर1 सहित आमे डाइजेस्ट करछे आमको ए स्टिकी एंड गुड़ाक ही मिलबो सेतिपाई आमे जदि अलग अलग सोर्स रु आमे जदि डीएनए नौचे एटा मु नेची गोटे वेक्टर डीएनए एंड दिस इज अनदर डीएनए फ्रॉम दिस इज अ डीएनए फ्रॉम अनदर सोर्स व्हिच इज योर फॉरेन डीएनए जदि मु ए दीटा जाक डीएनए को मु इको आर1 रे डाइजेस्ट करची दिस ओवरहैंगिंग एंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी ए ओवरहैंगिंग एंड गुडा को कॉम्प्लीमेंटरी हला माने कोन हमरो डीएनए कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग संगे संगे करिदबो ताको जोठी कॉम्प्लीमेंटरी बेस गुडा को देखा गला तारो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग से करि सको सो एटी देखो हमरो डीएनए रो कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग हे गला कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग हला परे लाइगेज आसीकी हमरो ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का भितरे हमरो वेक्टर डीएनए भितरे आउ फॉरेन डीएनए भितरे तारो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ताको आसीकी तयारी करिनला आ हमको गोटे कंप्लीट डीएनए ते मिलला so this is how your sticky end are helpful in proving so this gives even a better picture why I am giving this one तमे सीक्वेंस सहित तमे जानि पारिबो जे एक्चुअली केमिति डिवीजन एक्चुअली केमिति कटिंग टा होची if this is if this is a part of my chromosome and the region which is in your yellow is part of my specific gene what a specific gene जोटा को मु आइसोलेट करबा पे चाहूची आ ए रेड कलर रे जामे जोटा देखुचे एटा होची रेस्ट्रिक्शन साइट्स ओके सो मो जीन टा को बाहर करबा पे गोटे पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन दिस इज इको आर1 रेस्ट्रिक्शन साइट मु इको आर1 रे मो एंटायर क्रोमोसोम टा को मु डाइजेस्ट कर देली तो मो जीन ऑफ इंटरेस्ट टा पाई मो जीन ऑफ इंटरेस्ट रे ओवरहैंगिंग एंड्स गुडा अछि बा मो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट रे ईच साइड रे ओवरहैंगिंग एंड्स अछि ओके आई एम डाइजेस्टिंग दिस इज अ वेक्टर कोन इट इज आल्सो अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मु गोटे वेक्टर जे कि मो जीन को कैरी करिवो मु ताको भी से सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रे मु काटी तो एटा होची वेक्टर रो इको आर1 रेस्ट्रिक्शन साइट मु से सेम ये रे काटिले मते अगेन मिली गला वेक्टर रो डीएनए मते मिली गला जहार की ओवरहैंगिंग एंड सच आ वेक्टर रो ओवरहैंगिंग एंड आ द जीन ऑफ the gene that I have isolated their overhanging end they are complementary semane complementary base pairing kariki phosphodiester bond form kale and we have got a recombinant DNA molecule okay so we have dealt a lot about this restriction enzyme we have dealt about how they were discovered केमिति semane cut करचंती तांकर nomenclature कोन ए सब आमे डील कर सकते but from where why is this restriction enzyme present okay restriction enzyme basically they are your protein or your enzymes which are present in your bacteria for their defense mechanism for their self defense bacteria ro self defense by a restriction enzyme muraka bacteria vitare acha usually bacteria are infected by your virus which is known as the bacteriophage your bacteriophage are viruses that are infecting your bacteria so whenever this DNA of this bacteriophage will enter the bacteria the bacterial endonucleus it will cleave the foreign DNA जो समय रे हमर फेस पार्टिकल रो DNA टा एंटर करिवो गोटे बैक्टीरिया भितरु बैक्टीरिया रो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
replicate inside the bacteria. से restrict कर दोची viral DNA रो replication टाको restrict कर दोची. Hence the name was given here restriction endonuclease. Okay. तो आम माइंड को गोटे क्वेश्चन आसुची डीएनए जदि से फॉरेन डीएनए काटिला से को भी डीएनए काटि पारिबो. Then how this restriction enzyme is basically recognizing between self DNA. तार निजर भी क्रोमोसोम अछि ता निजर डीएनए अछि से ता निजर डीएनए टाको केमिति रिकॉग्नाइज करछि फॉरेन डीएनए आ से तार निजर डीएनए टाको काहे के काटि से ता निजर डीएनए टाको काटुनी because of an enzyme which is known as a methylase. What does this methylase do? This methylase adds a methyl group to your restriction site. ता माने कोन जेते restriction sites अछि हमर बैक्टीरियल क्रोमोसोम रे प्रति restriction site रे तार जो बेस पेयर उडा अछि से बेस पेयर किछिटा बेस पेयर को से किछिटा बेस पेयर सहित से मिथाइल ग्रुप ता अटैच कर दी था से सबु बेस पेयर रे restriction site रो सबु बेस पेयर रे मिथाइल ग्रुप अटैच करे ना किछिटा स्पेसिफिक बेस गुडा करे से मिथाइल ग्रुप ता अटैच कर दे था बेस पेयर तो नहीं किछिटा स्पेसिफिक बेस से अटैच करी थाए. Usually your adenine and your cytosine, these two are usually methyl. So जेते बेले बैक्टीरिया रो सबु रेस्ट्रिक्शन साइट उडा को मिथाइलेटेड हे गला हमर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केबे भी मिथाइलेटेड रेस्ट्रिक्शन साइट को चिन्ही पारिबो नाही कि बाइंड करि पारिबो नाही. से डीएनए को बाइंड कले ही रेस्ट्रिक्शन साइट रे से काटुची से इस रेस्ट्रिक्शन साइट टा को चिन्ही के काटुची जेते बेले गोटे मिथाइल ग्रुप रही गला इको R1 टा आउ ए साइट को चिन्हिबो नाही किंतु जेते बेले मिथाइल ग्रुप नाही इको R1 टा चिन्हुची आउ काटुची भी से डीएनए किंतु मिथाइल ग्रुप रही गला माने से चिन्ही पारुनी से डीएनए टा को आउ काटि पारु. दिस एंटायर डीएनए ऑफ द bacteria it is methylated at your restriction site because of which the bacterial genome is protected from your restriction endonuclease. So this restriction endonuclease and methylase together they constitute your restriction modification system of your bacteria. This is your restriction modification system. Okay. So we have done with the cleaving enzymes. आमे cleaving enzyme सारी साले एबे आमे आउ दीटा enzyme deal करिबा which are synthesizing enzymes. This synthesizing enzyme basically they are required for synthesis of DNA. आमे जेते बेले recombinant DNA technology processes उडा को करूचे बेले बेले कोन हुए आम पाखर जो starting DNA material थिबा बहुत कम amount रे था. So आमको DNA टा artificially बाहर हमर भीतर जेते बेले DNA synthesis हुए आमे सेटा को replication किंतु आमे जेते डीएनए टा को बाहर टेस्ट ट्यूब रे सिंथेसाइज करूचे दैट इज नोन एज योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके इट इज नोन एज योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा आमे मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ योर डीएनए वी कैन जनरेट. तो बहुत अधिक अमाउंट ऑफ डीएनए हम स्टार्टिंग मटेरियल जोड़ा बहुत अधिक अमाउंट रे हे गले हमर क्लोनिंग प्रोसेस टा बहुत सुविधा हे जाय. तो सेटा किमिति आमे सिंथेसाइज डीएनए रो सिंथेसिस ता बाहर किमिति हुए हमको गोटे टेम्पलेट दरकार. वी नीड अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ योर कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड. हमर रेप्लिकेशन प्रोसेस ता जेमिति हेई थाए बाहर भी हमें डीएनए टा को सेमिति तयारी करिता को एंजाइम रो हेल्प हमें नहीं खाओ. वी टेक द हेल्प ऑफ योर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. Okay, but the DNA polymerase which is present in our body is different to the DNA polymerase which we will be using in PCR reaction. We call it as a tag DNA polymerase. Okay, so DNA polymerase रहिला आउ synthesis पाई हमको आउ गोटे भी जिंस दरकार जोटा कि हमें कहूचे primer. What is this primer? This primer is a short complementary sequence of your template DNA. केते short सेटा 15 रु 35 base pair 15 ru 35 base pair पर्यंत सेही सीक्वेंस टा हेता. इट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ योर डीएनए. केमिति का पीस ए पीस टा कॉम्प्लीमेंटरी हेता टू योर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ए प्राइमर टा आसी की जोड़ी हे साला परे इनिशियल रीजन ऑफ योर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एटी जोड़ी हे साला परे देन व्हाट दिस पॉलीमरेज डज इज इट गोज ऑन adding
one by one your nucleotide. को nucleotide complementary nucleotide. Suppose एटी adenine अच्छी adenine जगह से thymine add करिबो, guanine जगह cytosine add करिबो, आ एमिति करी से complementary strand which is depicted by your grey color. A complementary strand का पूरा synthesize हो गला. After your synthesis, this DNA polymerase leaves your DNA. So this is your synthesizing enzyme DNA polymerase, which is helping us in creation of your double-stranded DNA. At the same time, we are having another enzyme which is known as the reverse transcriptase. What is this reverse transcriptase then? This reverse transcriptase will be using a RNA as a template. आमे जते बेले DNA polymerase आमे देखी थिले आमर template टा गोटे DNA थिला, गोटे single stranded DNA. किंतु जते बेले आमे reverse transcriptase यूज करछे आमर template टा गोटे RNA. आमे RNA रु आमे DNA टा तैयारी करछे. Usually inside our body what is happening? From DNA we are getting RNA. We never get a RNA out of your DNA within our body. But there are some lower organism like your virus जहाँ भितरे कि RNA टा is a genetic material. आउ से जते बेले higher organism मानो को infect करी थांती जहाँ कि genetic material DNA अच्छी से माने यूज करती यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाको तांकर DNA तैयारी करिबा पे फ्रॉम दे RNA जीनोम. So जेहेतु एटा गोटे रिवर्स प्रोसेस होची, that's why it is known as a reverse transcription, and the enzyme that is used is your reverse transcriptase. We will be dealing in detail about this when we will be dealing with your cDNA. Now coming to your another two enzymes, your DNA ligase and your alkaline phosphatase. So एबे पर्यंत आमे DNA को कट कर साले, आमे क्लीविंग एंजाइम देखिले आमे DNA टा को कट कर. DNA टा को कट कला परे आमे DNA आमे दीटा अलग सोर्स टू DNA आमे जोड़ू के आमे DNA टा को जोड़ू with the help of your DNA ligase. ए DNA ligase द्वारा आमे DNA fragment from your two different sources आमे जोड़ू. So this DNA ligase, it will be helping in the formation of your phosphodiester bond at the ends of the DNA strand that are already held together by your complementary base pair. ए जो दीटा DNA strand एठी देखो एठी गोटे बेस अछि एठी गोटे बेस अछि, those are complementary. आगो complementary base pairing हे गला तापरे DNA ligase आसीबो आ ए phosphodiester backbone टाको से तैयारी करि नबो. So this is your DNA ligase. And our last enzyme माने ता माने नाही जे we are not having any more enzyme, but for your purpose this is the last enzyme that we will be dealing with. It is your alkaline phosphatase. So what is the role of this alkaline phosphatase? Alkaline phosphatase कौन करिबा आमे जते बेले restriction endonuclease देकी गोटे plasmid, this is a circular plasmid टाको जते बेले आमे open करूचे, so तारा phosphate group गुड़ाक terminal end रे phosphate group अछि. ए alkaline phosphatase कौन करिबो ए terminal phosphate group गुड़ाको काढिबो. काहे के काढिबा दरकार? कारण आमे जदी काढी नथिबा आ DNA ligase जदी देबा हमरो ए plasmid टा पुनी religate हे. What is the end thing that we require in a recombinant DNA technology? We require a recombinant DNA. किंतु जदि प्लाज्मिड टा सेल्फ लाइगेट हे जाउची हमर इंसर्ट को से नो से फॉरेन DNA टा को नै पारे, तो सेटा को अवॉइड करिबा पे आमे फॉस्फेट ग्रुप टा को आगुरु काढी देइछे. एबे जेते बेले हमर इंसर्ट आसी के आगो बेस पेयरिंग कर साला परे तापरे आराम से लाइगेस आसी की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करी के हमर गोटे रिकॉम्बिनेंट DNA टा को क्रिएट करि नेबो. So your alkaline phosphatase, it removes the terminal phosphate group from your DNA. So with this we are done with the enzymes. Enzyme परे हमरो जो next tool जो थिला recombinant tool of your biotechnology, it was your recombinant DNA. Recombinant DNA रे we are having vector and we are having your insert. So first we will be dealing with your vector.